Bismillahirrahmanirrahim. I start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is exercise 23 and the book is New Countdown 8, grade 8 by Oxford University Press. And then in this, the first question and second question is related to the fill in the blank and true and false. So I'm starting from question 3. In the question, class marks mean capital X, values are given. What we have to do, we need to find the class size. Class size means the difference between the lower class limit and upper class limit. So we need to represent the values or the classes. Before representing the values, we need to find out the difference between each X. If we subtract 42 from 36, we get 6. If we after subtraction, we are getting 6 value. इस क्वेश्चन में आपके पास आप क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, यानी कैपिटल एक्स वैल्यूज दी हुई है और उसमें से आपने क्लास साइज आइडेंटिफाई करना है और क्लास साइज भी आइडेंटिफाई हो जाएगा उससे, और उसके बाद आपने यानी क्लासेस फिर आपने रिप्रेजेंट भी करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आप हर वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो एक नंबर आपके पास कांस्टेंट आएगा, जिसे हम 6 कह रहे हैं, जो हम दिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज। उस 6 को 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे इसलिए करना है कि हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। 2 पे उसको डिवाइड करें 3 आ जाता है। 3 एक दफ़ा हर वैल्यू यानी 3 हर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट भी होगा और ऐड भी होगा, यानी तफरीक भी होगा और जमा भी होगा। जैसे 36 में से 3 माइनस करें तो 33 आता है, ऐड करें 39 आता है। 40 में से माइनस करें 3 तो 39, ऐड करें तो 45। इस 48 में से सब्ट्रैक्ट करें 3 तो माइनस करें 3 तो आपके पास 45, ऐड करें 51। अब इन क्लासेस को आप ऑपोजिटली ऐड भी करेंगी। जब ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास वही वैल्यूज आएंगी जो आपके क्वेश्चन में। इसका मतलब है आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, सही क्लासेस ली हैं। क्लास इंटरवल भी हर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के दरमियान 6 है, यानी क्लास साइज भी आपको 6 मेंशन कर दिया गया है और क्लासेस भी बना के बता दी गई हैं और वेरिफिकेशन भी हो गई है। Question 4 is the same as question 3.
4 भी बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह है और इसमें सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर हमने क्लास डिफरेंस लिया, क्लास साइज मालूम किया, फिर हमने उसको डिवाइड किया और हर वैल्यू में से वो जो वैल्यू 3 है वो सब्ट्रैक्ट भी होगी और ऐड भी होगी ताकि क्लासेस बन जाए हमारी। फिर हम क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करें ऐड करके 2 से डिवाइड करें। क्यों? इसलिए कि वेरिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस किया गया है कि हमारी क्या वैल्यूज सही आ रही हैं, क्या हमने क्लास इंटरवल सही लिया है जो कि वही डाटा शो कर रहा है एक्स की वैल्यूज का जो कि क्वेश्चन में गिवन है। This question 5, 30 apples picked at a random from a consignment way. So the values are given. These values are 13 number. We have to find or form a frequency distribution table of class width, that is 20. So class width is mentioned in the question. So what we have to do, we have to arrange the data in ascending order. Whether you arrange the data in descending order or ascending order, both are correct. But ascending order gives you the minimum value first and maximum value at the last. So I am taking values according to ascending order. Then from the question class width is 20. So I am taking the minimum value is 68 and maximum value is 142. So I need to find out the value that is closer to 65. 68 means closer to 68, where we can take 70. Closer to 68 is whether this it can be a 65 value, it can be 70. So I will prefer 65 because if I take 70 then 68 will not be included. So we are taking the first class from 65 and add 20, then we are getting 85. Then 85 to 105, then 105 to 125, then 145 to 145. Now see the values. From 65 means starting values from 65 till 84 values we have to take in the first class. We will not count 85 in the first class. We will count 85 in the second class. In classes that is starting from 85 then till 105. Now we are getting frequencies. The numbers from 65 till 84 are 9. From 85 till 104 are 9. From 105 to 124, 7. From 125 to 144, there are 5 values. When you count these 5, all the values, the sum of the frequency must be equal to 30. If it is not 30 or more than 30, less than 30, it means we are counting wrong. क्वेश्चन नंबर 5 में 30 एप्पल्स को की स्टेटमेंट दी गई है कि इसका वेट कंसाइनमेंट में इतना है और उसमें 30 वैल्यूज दी गई हैं और कहा है कि आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उसमें क्लास वेट जो होगी वो 20 होगी। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करते हैं तो मिनिमम वैल्यू पहले आ जाती है और मैक्सिमम बाद में आती है, तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। उसके बाद जब अरेंजमेंट हो जाता है डाटा का तो हमने 68 या तो 70 से क्लोजर हो या 65 से, तो हम 65 से काउंट करेंगे क्योंकि अगर 70 वैल्यू लेते हैं तो 68 काउंट नहीं होगा, अगर 65 लेते हैं तो उसमें 68 काउंट हो जाएगा। और फिर हम वैल्यूज़ में 20 ऐड करते हैं तो 65 से 20 ऐड किया 85, 85 से ऐड किया 105, 105 से ऐड किया 20, 125, 125 में 20 ऐड किए तो 145। अब वैल्यूज़ लेने के लिए 65 से 84 तक वैल्यूज़ हमने काउंट करनी है फ्रीक्वेंसी में। 85 फर्स्ट क्लास में काउंट नहीं होगा, 85 सेकेंड क्लास में काउंट होगा। इसी तरह 85 से 104 तक वैल्यूज़ लेनी है, फिर 105 से 124 तक लेनी है वैल्यूज़ काउंट करनी है और नेक्स्ट क्लास में 125 से 144 तक वैल्यूज़ काउंट करनी है। जब इनको सम करेंगे तो 30 के इक्वल आना चाहिए। अगर 30 से कम या ज़्यादा होती है वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर कहीं पे हमने कुछ मिस किया है, उसको चेक करना पड़ेगा।
In the question 6, the following is a record of the marks obtained by a group of 35 girls in an examination. Present the data in the form of frequency distribution tail using the same class size being 20 to 25, 25 not included in the brackets. So there are 35 girls and marks are given there. 35 girls marks. Arrange the data in ascending order. The minimum value is 13 and maximum value is 46. Then find the, suppose we take classes 7 because we have already know that we need to make the table more than 6. So I will prefer, this is 33. So 33, I will take, suppose if I take 7 classes, then the class size is 33 by 7. 33 by 7 means 33 divided by 7 will give you a decimal value. So what we have to do, we have to take the nearest value that gives you the multiple of 35. 7th, if we take 35 divided by 7, it is 5. Take the values. Now the class size will be 5. Start from 10. 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. These are the values. And 1 over, then the frequencies are given. So you will count the values from 10 to 14. Then next class 15 to 19. In the next class 20 to 24. Then in the next class 25, from 25 till 29. Next class from 30 to 34. So you will arrange the frequencies according to this. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 35 गर्ल्स के मार्क्स दिए गए हैं और इसमें जो क्लास है वो 20 से 25 तक मेंशन की गई है, यानी 5 का इसमें हाइट होगी, क्लास हाइट या साइज होगा, और इसमें 25 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह हम पहले अरेंज करेंगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, फिर रेंज हम मालूम करेंगे। रेंज से 46 में से 13 माइनस किए 33 आ रहा है। 33 को अगर हम 7 से पे डिवाइड करें, 7 क्यों, 7 अगर क्लासेस, सपोज हम फर्स्ट करें कि हम 7 क्लासेस लेते हैं, तो 7 क्लासेस क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 6, 7 या 8 क्लासेस जो है वो आपके आइडियल है। तो अगर मैं 7 क्लासेस लेती हूँ तो मेरे पास 33 के साथ अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी, तकसीम करूँगी, तो मेरे पास आंसर डेसिमल्स में आएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं एक ऐसी वैल्यू ले लूँ जो 7 के टेबल में आती हो, जो कि 35 है। उससे हमें जो अंदाज़ा हो जाएगा 35 मुझे दे रहा है, 7 को डिवाइड करूँ तो 5 क्लास हाइट दे रहा है। इसी तरह मैं क्लासेस बनाऊंगी और उनमें उनके दरमियान जो क्लास साइज है वो 5 का रखूँगी डिफरेंस। जब वैल्यूज़ काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसी में तो 10 से लेके 14 तक काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे 10 से 14 तक 1 वैल्यू है, फिर 15 से 19 तक नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके पास 9 एंड 20 से 24 तक, फिर 25 से 29 तक। इसी तरह हर क्लास में जो फॉर 15 दी हुई वैल्यू, 15 वैल्यू को काउंट करेंगे, उससे एक वैल्यू पीछे वैल्यूज़ को काउंट करेंगे हम, ठीक है। ये हमने इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन का जो डाटा गिवन है, इसमें ग्राफ हमने इसको रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और मार्क्स को मैंने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है और फ्रिक्वेंसी को मैंने वाई एक्सिस पे किया है। उसका जो स्केल लिया है वो एक्सिस एक्स एक्सिस पे मैंने 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर या 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 5 मार्क्स है, जो कि टाइटल में मेंशन है मार्क्स। और ऑन वाई एक्सिस में 1 यूनिट, यूनिट भी कह सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 नंबर। इस तरह से हमारा स्केल बन जाएगा। और हिस्टोग्राम में पहले पॉइंट्स, जैसे 10 1 के ऑपोजिट आ रहा है, 5 के 15 के ऑपोजिट जो वैल्यू आ रही है उसमें डॉट्स लगा लें, फिर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें। स्ट्रेट लाइंस जब ड्रॉ हो जाए तो फिर उनको मैच कर दें और इस तरह आपका हिस्टोग्राम तैयार हो जाएगा। In this question, question number 7, the values are given. Marks obtained by 10 students in a class
in a class mathematics test. Then find out the range and the mean, and what you have to do, you will add all the values. First arrange the data in ascending order, then find the range, and then for mean we need to add all the numbers and divide by numbers. It means total values are 10 in number. When we divide, we are getting 30.4. This is the answer. In question number 8, draw a histogram of the following data which gives the ages of doctors working in a city. So ages are given, number of doctors. So what we have to do, we have to make a histogram that is on the next page. Here we are representing age on x-axis and number of doctors on y-axis. The scale is taken as on x-axis 1 unit, we can say 1 unit, 1 block, 1 centimeter is equals to 5 years. Okay, so there is a gap between 5 plus 5, 10 plus 5, 15. On y-axis 1 unit, 1 block, 1 centimeter is equals to 2 doctors. So first place the points, plot the points, then draw the lines, then match the lines, and then match the lines together. A histogram is formed. This is question number 9, and we need to find the value mean of the first natural numbers. First 10 natural numbers. The first 10 natural numbers are starting from 1 till 10, and then we will add these numbers, divide by all numbers. We are getting 5.5. Then question number 10, determine the value, the mean of the first 8 odd natural numbers. So we are taking first 8 odd natural numbers that are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 13 and 15. Divide by 8, we are getting value 8. Question is a tricky question. In this question, it is mentioned the average salary of 15 workers in a factory is rupees 12,500. If the salary of the manager of the factory is rupees 36,500, find the average salary of all the 16 employees. Now, if we count manager along with the 15, then it will be 16. First of all, we need to find out the number of workers. Workers are 15 and manager is 1. Now, average salary of the workers, it is rupees 12,500. Salary of the manager is 36,500 rupees. The average salary of 15 workers. First, we need to find out the average salary of the 15 workers. That is sum of salaries number of workers. Then sum of salaries average multiplied by number of workers. We are getting the value 1,87,500 rupees. The sum of this is the value that is for the 15 workers. We have to find the value of average for 16. So for the 16, we will add the salary of the 16 person, that who is the manager, and when we add, it becomes 2,24,000. Average salary of the 16 employees is equal to 2,24,000 divided by 16. We are getting 14,000 rupees. 17. The following table shows the marks obtained out of 25 by the students of the class 8 in English. Determine the average marks obtained by the students. Marks are given, number of students are given. We will make another table for the solution. Then put the values. These are the marks. These are the midpoints, not classes. And number of students are given in the form of frequency. This is the group data. For the group data, we will make a column for f of f and x. Means f is going to multiply by x each value. We are getting this 11 multiplied by 4, 13 multiplied by 3 gives you 39, 15 multiplied by 7, 105, 18 multiplied by 16, 228, 19 multiplied by 4, 76, 20 multiplied by 3, 60, 21 multiplied by 2, 42, 22 multiplied by 1, 22.
Then there will be a last row that is based on total, and sum of frequencies is equals to 40. Sum of f of x values are 673. This is the group data. So for group data, the formula is x bar is equals to summation f of x over summation f. Keep the values or put the values in the formula, you will get the answer, that is 16.9. Question 13. The following table shows how much students of the class weigh and determine the mean. This is the group data. Classes are given in the form of weight. What we have to do, we have to find out the marks, class marks, midpoints. Add 28 in 30, divide by 2, you are getting 29. 30 plus 32 divided by 2, it is 31. 32 plus 34 divided by 2, 33. 34 plus 36 divided by 2, 35. 36 plus 38 divided by 2, it is 37. 38 plus 40 divided by 2, 39. Now number of students are given in the question. This is frequency. What we have to find out, we need to multiply f with x, each value. If we multiply 29 by 4, we are getting 116. 31 multiplied by 8, 248. 33 multiplied by 10, 330. 35 multiplied by 5, 175. 37 multiplied by 4, 148. 39 multiplied by 1, it is equals to 39. Now the last column, the last row contains total. Sum of f is 32, sum of fx is 1056. The mean for the group data is summation fx divided by summation f. Keep the values in the formulas, then divide, you are getting the value. This is 33. This is question 14. In the question, this is ungrouped data. There are only values, no frequencies given. Find the mean, median and mode of the given data. For the mean, or sum of all values, divide by 17. 17 are the values, number of values. You are getting the answer 39.76. Now for median, we need to arrange the data in ascending order. When we arrange the data in ascending order, we know that the values are in numbers. It is 17. 17 is an odd number. For finding the median of odd numbers, we will keep the values equal on the left hand side and right hand side. If you see, there is a highlighter. The highlight, I have highlighted 33. On the right side there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 values. On the left side there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 values. So 33 is our median, mid value. Mod is the number that is coming more frequently. The occurrence is there. 5 is coming more time than any other number. So it is mod. Mod, we count the number that is coming more times. More frequently occurring number is called mod. In question 15, the marks scored by 30 students in a class are given below. Marks are given. In front of the marks there is a frequency, but frequency is not mentioned in the question. There are sub parts of the question. Complete the frequency column, then which class contains the mod, and last one is which class contains the median. So what we have to do, we need to find out the minimum value and maximum value. Minimum value is 17 and maximum is 100. So 17, what we have to do, we take the class, we will start from, because if we see the table, that is 51 till 60, 17 cannot come in the class of 51 and 60. So we will start with the backward counting, 41 to 50, 31 to 40, 21 to 30 and 11 to 20. Because 11 to 20 we can easily keep the values 17
in between 11 and 20. Now find the value frequencies. 11, between 11 and 20 there is one value, between 21 and 30 there is one value, between 31 and 40 is 0, between 41 to 52 values, then 51 to 61 value, 61 to 74, 71 to 87, 81 to 97, 91 to 107. So we have done with the part 1. Now part 2, which class contains the mod? 7 is coming how many times? 3 times. So we will write the classes. First is 71 till 80, then 81 to 90, and then 91 to 100. The third part is which class contains the median. For the median, we will arrange the frequencies in ascending order: 1, 0, 1, 1, 1, 2, 4, 7, 7, 7. Then these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 values, 9 numbers in frequency. So we will keep 4 values on the left hand side, 4 on the right hand side. To find out the median, median is 41 class, median class is 41 and 50. This is the last question. And during the monsoon season, the rain level in the city were values are in millimeter, 16, 16. Now there are sub parts. Find the mean, median, mod. Number 2 part is next year if rain levels are half of what they are now, what will happen to the mean and median values. So the first we will find out mean, then median and mod. For mean we will keep the values, add the values, divide by 12 number of values. We are getting 13.75. Then for median we need to keep the values in descending order. When we keep the values in descending order, we are getting the mid values are, because it is 12, so for even number what we have to do, we have 13 and 14, two values are coming in the middle. We will take these two values, divide by 2, and first add and divide by 2, we are getting 13.5. For mod, the more frequent, the number that is coming more frequently, more time, it is 13 and 16. Now the second part is next year if rain levels are half what they are now, what will happen to the rain and median values. Mean and median will also be approximately half. If everything will be half, then mean and median will be half in the value. This is all from my side. I hope you would like the questions, the explanation, and you will understand each and everything. If you are not understanding anything, just contact me on my email. I'm waiting for your comments and your response. Thank you so much.